Very good evening to all. Welcome to our episode 6 of season 2 Greener, Happier Tomorrow. As we know, we are again back with the new story with Ms. Ved Amrita ji. Parijay Genus, as you all know, that we started in 2017 with a motive to promote greenery and create employment. So this is Greener Happier Tomorrow series is our initiative to bring a community of like-minded people who are working towards the environment. Whether they are growing even a single plant at their home, they are also contributing to the environment. Because our mission is that every corner needs a plant. It's about recognizing their effort as well as promoting and inspiring more people to grow more and more plants. So welcome Ms. Ved Amrita ji. Amrita ji is a founder member of Karam Yoga Trust and personalized designer for sustainable clothing. She is an enthusiastic environmentalist with a strong dedication towards protecting environment while living a sustainable life. Welcome, Amrita ji. Thank you. First of all, Hanji. So, first of all, we would like to know about your journey, that how you started developing your farm and came into this sustainable clothing. Clothing, I think I was always interested in, and that was my passion, hobby, or profession, everything. So, but same, with plants, because my both the parents, like grandparents, they were farmers. So I grew up in that kind of environment. Although my father was in army, so we were traveling around. But छुट्टियों में जैसे घर आते थे, so we saw all those big cotton farms and jute farms and गेहूं and rice and everything. Right. So वो तो blood में ही है, farming and designing. I think my mother used to make my clothes. तो मैंने कभी बाजार के खरीदे ही नहीं. So when I was in a hostel, I used to stitch my own clothes with hands, सुई धागे से, Right. without machine. Oh. I wanted to be a doctor, but then I had some fights with my teachers, and I realized that some kind of unfairness there in my marks, and I told my dad that I don't want to study more. So I did my graduation from Delhi, Aurobindo College, and after that I was like, I have to do something, because I'm not a person who's just gonna go and get married and have a family like that. So I just joined the JD Institute just for fun, that if I can get some more technical terms and all that, which I left after 6 months, and I started working with a few brands. Like I worked with Krishna Mehta as a store manager, and then I worked in an export house as a designer, and then I worked with Ravi Bajaj again as a store manager. And that was my last job where I was for 6 years. And then I started on my own, and I thought that, this is what I'm going to do. And I was very fond of, making something out of leftover pieces or old pieces. And I used to feel, why to waste that? Kahan jayega itna waste? We are just using and throwing things. So from there, my journey began with the sustainable, you can say. अभी भी जैसे फ्रेंड्स होते हैं, I tell them कि यार अपने साड़ी निकालो, दुपट्टे निकालो, shawls निकालो, I'll make something out of it rather than buying a new fabric. So yeah, that started from there. But plantation and growing food was my another passion. कि मैं अपने घर में पालक, especially पालक, I never used to eat it in Delhi. So whatever I grew in my spots, I used to eat that only. And I was working with some street kids in Delhi for 7 years, and I realized that I need to, because there I was a little bound in a way that parents won't allow their kids to go to school, and
things like that. And I was a little disheartened and I wanted to leave Delhi actually. And I thought maybe I'll grow my own food, because I realized that, earning money is one thing, but then what is at stake? So the kind of food we are eating, the kind of air we are breathing, the kind of water we are drinking, nothing is kind of nourishing in a way in the cities, because it is so adulterated. Or so I started thinking of moving out of Delhi, and then somehow a group of friends, we found out this place in Dehradun. So we formed a trust because we wanted to encourage villagers also, because they are leaving these days their places and going to the cities, and or they are growing they are putting fertilizers and all. So we thought just going there and giving lectures on that won't work until unless I start doing it on my own. So we started this project and we found this place, and then we started growing desi. I'm using all desi seeds, so I'm collecting from wherever I get and I'm growing that. So a lot of experiments, a lot of failures and everything, yes. But when in my introduction you said environmentalist, I really object that word, because I don't think I think it's a very specific term, and I don't know whether I'm in that kind of category. So Amrita yes, ji, they use the word environmentalist for any person who is planting and who considers and who is concerned, जिसको ये डर है और ये कॉन्शियसनेस है कि यस ये धरती हमारी है, ये हमारा घर है, yeah, and we are responsible for our mother nature. okay, So that's why मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसमें इतना मत सोचिए. एनवायरमेंट जो हम एनवायरमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, हम लोग चाहे अपने घर में, ये जरूरी नहीं है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स लाएंगे, कुछ ऐसा करें. अगर हम खुद अपने अपने हिस्से के पौधे भी लगा लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन इस एनवायरमेंट से ले रहे हैं, जो पानी हम यहाँ से पी रहे हैं, जो खाना हम इस धरती से ले रहे हैं, अगर हम उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, गिव बैक कर सकते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. तो अगर हम सब खुद में सुधार रहे हैं, तो हम सब जो है एनवायरमेंटलिस्ट ही रहेंगे. इसीलिए जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपने रियलाइज किया कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे खुद के लिए खाना उगाना है. सो एज हमारा भी लोगो है दैट ग्रो योर ओन फूड, ग्रो योर ओन फार्मा. हम हॉस्पिटल बनाने की बात क्यों करते हैं? हम लोग स्कूल कॉलेजेस इनकी बात करें, हम लोग ऐसे हैप्पीनेस सेंटर्स की बात करें, जहाँ पर हम लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में ये ट्रेन कर रहे हैं कि आपको अच्छा खाना कैसे खाना है, बिल्कुल, आपको अच्छे से सांस कैसे लेना है, साफ पानी कैसे पीना है. अगर हम ये करेंगे तो हॉस्पिटल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बिल्कुल, बिल्कुल. We use the sentence that prevention is better than cure. Yeah. But arrangements जो हम कर रहे हैं, वो क्योर के लिए कर रहे हैं, प्रिवेंशन के लिए नहीं कर रहे हैं. It's true. We should demand for institutes or land areas where we can grow food. Okay. We should demand for the land where we can grow the plants that can provide us fresh oxygen. Yes. We should demand for the funds for cleaning of the water bodies, for developing more water bodies, so that we can stay healthy forever. Yeah. So hospitals की demand तो रहेगी ही नहीं. So Amrita ji, when did you started your journey? कैसे आपने ये farm develop करना शुरू किया? ये actually it is approximately 26 बीघास of land, and यहाँ पे लोगों ने खेती छोड़ दी थी almost, सिर्फ अपने जितना करते थे. Okay. It's a small village where we have only 4 houses and one of them is ours. So people had stopped almost because यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं, जंगली सुअर बहुत आते हैं, बहुत सारे मोर हैं, बर्ड्स हैं, तो वो छोटी छोटी खेती करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज उनको लगता है चिड़िया खा गई, सुअर खत्म कर गए, बंदर खा गए. So we encouraged, they discouraged us a lot.
मैडम ये लगाने का कोई फायदा नहीं है, बंदर खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, वो खा जाएंगे. So I said it's okay because we are here to coexist. Right. Actually, we are entering into their premises. Yes, yes. So and we have not left anything for them in the jungles because here सारे साल के जंगल हैं. So they don't get sufficient food. Where will they go? Yes. So personally, I always felt कि fruits के पेड़ लगाने चाहिए जंगलों में, घर के बाहर, आसपास, so that they also get their share. Yes. I think human beings एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा सेल्फिश है. उसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, एंड वो इतना एक्यूमुलेट करता है जितनी उसको जरूरत भी नहीं है. डजंट नो व्हाई एंड वेयर दे गोना यूज इट, whatever, whether it is money, whether it is power, whether it is clothing, whether it is anything, they don't know where to stop. बिल्कुल. So I think, yeah. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हम लोग बिना सोचे समझे खरीद रहे हैं. मार्केट भी भरी हुई है, हमारे वार्डरोब्स भी भरे हुए हैं, घर भी भरे हुए हैं. बिल्कुल. Then we want to buy more. हम खरीदते रहते हैं और वो जो रखी हुई चीजें वो सड़ती जाती हैं और हम फेंकते हैं उनको फिर फाइनली. एंड वो फिर गार्बेज डंप एक बन जाता है, एंड हमारे रिसोर्सेज पर वो ओवरबर्डन है. बिल्कुल इसको प्रोड्यूस करने का और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने का. बिल्कुल. तो एक्चुअली ये जगह पे आने पे हमको एक तो ये लगा, सबसे ज्यादा हमारे को चैलेंजिंग लग रहा था टॉयलेट्स का, बिकॉज सिटीज में तो बड़ा कन्वीनियंट है, स्यूएज है, हमें ये नहीं पता स्यूएज एंड कहाँ होता है, कहाँ उसका सारा मटेरियल जाता है, which goes into the river and then from river to the sea. Yes. So basically हम लोग जितने और प्राणी हैं इस अर्थ के, पानी के, हम सारा गंद उनके मुंह पे डालते हैं. Right. और हमारे यहाँ पे अगर एक किसी का कुत्ता बाहर आके कुछ पॉटी शॉटी कर दे तो हम लोग बवंडर कर देते हैं, ओ इट्स डर्टी, इट्स डर्टी. एंड समटाइम्स आई रियली फील कि एनिमल्स सोचते होंगे, ओ माय गॉड, दीज ह्यूमन बीइंग्स, they are so dirty. You are absolutely right. If you see yourself from that side, you can actually feel, because हम तो बोल पाते हैं, वो हमें बोल नहीं पाते हैं, और so I really feel that so we thought that we want to have few dry toilets here, which we are going to build now. We had built 2 with pits, but they are like self-sufficient. We are not using Harpix. We are not using chemicals there. We are using, instead of, washing soap, we are using Rita. Yes, yes. Rita and some bio, we have made some, what do you call, bio liquid. Bioenzymes? Huh? Bioenzymes? Bioenzymes, yes, bioenzymes, and we are using that, and we are using Rita mostly. So so that उसमें जितना भी अंदर उसका प्रोसेस है वो इजीली चले, उसमें कोई हर्डल ना हो. एंड यहाँ पे आने का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि एक तो यहाँ पे प्लास्टिक इतना आता है, आप मार्केट में जाओ, whatever you want to buy. So we have reduced almost, like कभी दूध लाना पड़ता है तो हमको वहां से मिलता है, गांव से इतना मिल नहीं पाता है, अदरवाइज डोलू में लाते हैं, बट वो पैकेट कई बार लाने पड़ते हैं. बट दाल चावल एवरीथिंग वी गो एंड बाय इन आवर फैब्रिक बैग्स, ओपन वाला जो होता है. वी डोंट बाय पैक्ड फूड. हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि यहाँ पे प्लास्टिक ना आए. लूज इसमें से बाय. हाँ, ये लूज जो है मार्केट में है, उसी को हम लोग क्लॉथ या पेपर बैग्स में. पेपर बैग्स भी जो है वो एक बर्डन रहेंगे, बिकॉज एक पेपर बनाने के लिए भी बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं. हाँ नहीं, और पेपर बैग्स में ही होता है, आप कैरी नहीं कर सकते हो. अगर आप लाइक बाइक पे हो या पैदल भी जा रहे हो तो आप कैरी नहीं कर सकते हो. Right. तो इसलिए वी हैव मेड लॉट ऑफ फैब्रिक बैग्स. हमारा एक और प्रोजेक्ट है जीरो इन करके, फ्रेंड ऑफ माइन उसने स्टार्ट किया था कोविड टाइम में, when people didn't have jobs and they've lost their jobs and all. So he started this kind of project, and he gave them to make bags, different sets of bags, small pouches, 1 kg pouches, 2 kg pouches, and 5 kilo stuff bags, so that you can, keep one set in your car, one set in your home, wherever you go, you keep one set, so that
you always have bags with you. So अगर मैं market जाती हूँ और मेरे पास bag नहीं होता है, I make sure that I come back, which is like 15 kilometers coming back. So it's like a punishment for next time I remember. I don't want to do that. Right, you're absolutely right. Yeah. आपका ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ पर फार्म पर अभी आपके साथ और भी कुछ लोग हैं? हमारे साथ like my mother is here, a friend of mine is here, and बाकी कुछ friends हैं जो आते जाते रहते हैं. They are supporting us because we have no jobs right now. We have left everything and invested everything here. So and taking care of this place, I have like 6 dogs and 2 cats, rescued cats. So it's a big family here, and it keeps on adding. Lots of Scorpios roaming around sometimes. So Yeah. you feel that city life was better, or here you are living a good life? Oh my God, this is much better. अभी भी दिल्ली कभी जाना होता है मुझे अपने काम के सिलसिले में, तो मेरी रूह कांप जाती है. So I go like Friday evening में रात की बस 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ती हूँ. Morning I reach there, Saturday I finish my work, and Sunday I finish my work. Sunday evening I take the train back. Not more than that. जितना काम हो गया, बाकी इससे ज्यादा नहीं. So twice in a month I go to Delhi. So Delhi is basically very crowded and बहुत ही suffocating लगता होगा इतने खुले अब लगता है, but when I was living there, I used to love Delhi also. It's not that, because there also I was doing the same things. I was planting trees in our park, nearby park. My office के पास में there was a park, उसमें कोई trees नहीं थे, तो लड़ झगड़ के कर लेते थे हम, plants लगा देते, because they never allowed us to put fruit plants. मुझे लगता है fruit plants इतने लगाओ सड़कों पे चारों तरफ जहां जगह मिले, so that एक गरीब बंदा भी भूखा कोई हो वो तोड़ के खा सके. बिल्कुल, क्योंकि तोड़ के खाने के साथ साथ हमने कई बार देखा है कि इस तरह से रोड साइड पे जो फूड प्लांट्स लगे होते हैं वो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाते हैं. सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है. लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैडम वो ले जाएंगे. अरे यार ले गए तो क्या हो गया, थोड़ा सा कमा लेंगे. हाँ एग्जैक्टली, मैंने वी हैव टू चेंज आवर मेंटालिटी कि दूसरा कितना कमा लेगा उससे हमको बड़ी प्रॉब्लम है. बिल्कुल, बिकॉज हम खुद कितना कमा लेते हैं उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा कितना कमा लेगा वो बड़ी प्रॉब्लम है उनको. तो ये तो अच्छा है अगर कोई आपके लगाए पौधे से अपनी भूख मिटा रहा है या वहां से कुछ कमा के अपने घर में रहने वाले लोगों की भूख मिटा रहा है. सो इट्स अ गुड. Of course, it's not about only humans, it's also about the tree, the birds, the animals, चिड़ियों के लिए भी कहाँ इतना दाना पानी रह गया आजकल. आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हम लोग उनको एक्स्ट्रा दाना पानी यहाँ से कटोरे रख के देते हैं, उससे अच्छा हम उनको नेचुरल उनका हैबिटेट हम जीवित रखें ना. हम ये शो प्लांट्स लगा देते हैं. मुझे उसका पॉइंट ही नहीं समझ में आता है कि यार ये शो के लिए क्यों लगा दिया. हमारी लाइफ ही शो ऑफ हो गई है. हम रियलिटी से हमारा बिल्कुल कनेक्शन ही कट गया लगता है. समटाइम्स आई फील लाइक सफदरजंग के इधर जो एक राउंड अबाउट है इन दिल्ली, वहां पे स्टील के बल्ब से बड़े बड़े लगा दिए जैसे कोई पेड़ उग गया हो. एंड आई वाज लाइक, व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक, माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग. आई मीन ट्रीज लगा देते यार. यहाँ पे सारे आसपास का लेबर है, वहां बैठ के खाना खाता है. देयर इज नो ट्री देयर. एक पेड़ है जिसके नीचे फिर सारे लोग बेचारे रेस्ट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं. I don't understand that. बिल्कुल. Recently, I also saw that roundabout, and I was with my friend, and my friend said, "इतना ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, and इसके ऊपर काफी criticism है." I think you are also telling me about the same roundabout. वहाँ पर स्टील का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है. वो स्टील के इतने बड़े बड़े अगली से उसमें पता नहीं क्या उसको बोलेंगे, मैं तो स्कल्पचर भी नहीं बोलूंगी उसको. They are like huge big bulb shape of a thing, and I mean really this is what we need. जी. So मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी, क्योंकि अभी लैंडस्केप और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स जो है वो एक लिमिटेड ही वैल्यू है प्लांट्स की, लिमिटेड वैरायटी है जो लगाई जाती है. उसके अलावा हम लोग और प्लांट्स के बारे में सोचते ही नहीं है. Those the palms and all जिनका शेड नहीं है, फ्रूट नहीं है, just an aesthetic value is there. No, I don't see aesthetic in that. I think everybody has their own sense of aesthetics, I think, because जो naturally जंगल में जो होता है, जंगल मेरे को chaotic कभी लगे ही नहीं. They look so beautiful.
बिकॉज नेचर कभी भी जो है वो स्ट्रेट नहीं होती है, नेचर ऑलवेज ग्रो रैंडम Of एंड course. दैट इज द ब्यूटी. वो हम लोग नकलीपन में इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमें पेडिक्योर मैनिक्योर अपने गार्डन का भी चाहिए होता है. इसी अगर आप मेरे यहाँ पे आके देखोगे ना, तो अभी मतलब ऐसा क्योस है, अंदर जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे बेलें एक दूसरे में, और वो इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं. मुझे लगता है माय गॉड, लुक एट देम. रेनी सीजन में जितने भी ये क्रीपर्स है, व्हेन दे क्लाइंब अप ऑन द ट्रीज फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एंड इट लुक्स लाइक दे आर कनेक्टिंग. They're राइट. connecting everything. जी. You feel so connected with them. So how can you just cut it off? सो अमृता जी, अभी आपकी ये जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स हैं, हम उन पे थोड़ा आगे चलते हैं. तो Sure. आप हमारे साथ कोई स्टोरीज अपनी जर्नी में शेयर करेंगे, कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ग्रो किया. बिल्कुल. तो दिस इज योर फर्स्ट इमेज. Okay. सो So ये बिल्कुल बिगिनिंग का था, एकदम बिगिनिंग का, जहाँ पे यहाँ पे पहले जिनसे हम लोगों ने जगह ली थी उनका काउ शेड था इसके एकदम साथ में. ओके. तो यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं. सो वी वर जस्ट क्लियरिंग अप दिस. बस एक मिर्ची का पौधा था जो आज तक है, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है. उसकी हम कटिंग कर देते हैं एंड इट ग्रोज एवरी ईयर. सो वी हैव नॉट अपरूटेड एनीथिंग फ्रॉम हियर. जो जहाँ था वैसा ही है. इनफैक्ट वी हैव प्लांटेड मोर. ओके. हाउ ओल्ड इज दिस प्लांट? पता नहीं, जब हम आए थे तब लगा हुआ था ऑलरेडी. सो इट्स लाइक नाउ 2 years. 2 years. हाँ. ओके. सो तो मिर्ची का ये है कि अगर आप उसकी कटिंग कर देते हैं तो इट ग्रोज. नेक्स्ट टाइम जब सीजन आता है सो इट स्प्राउट्स. ओके, दैट्स वंडरफुल. दैट मिर्ची, जो मुझे आज आपसे पता चल रहा है कि मिर्ची की अगर हम कटिंग रखते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से ग्रो करेगी. हाँ हाँ, उसको कटिंग कर दीजिए, नीचे थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर जब सीजन आता है वो अपने आप फूटने लगता है. जी जी. सो राइट. सो दिस इज योर नेक्स्ट इमेज पिक्चर. Yeah. So this is we are planting some trees, mango trees here, and this is land which is in between our land and the forest. So we want to make it like all tree kind of a place. So this is just the shuruat, beginning of doing something. अभी saplings हैं, and ये last year हम लोगों ने लगाए थे, और इस साल भी रिविजिट किए हैं हम लोगों ने इसको, गुड़ाई करके खाद पानी दोबारा से डाला है. सो इट्स ग्रोइंग मोर नाउ. So next picture, right? या This दिस इज is अगेन like a दैट mango प्लांटेशन. tree. या Is it मैंगो mango ट्री. tree? यस, मैंगो ट्री. ये अपने घर पे ही सैपलिंग्स किए हैं मैंने. वो जो भी आम अच्छा लगता था, टेस्टी लगता था, आई यूज्ड टू सेव दैट. और वैसे भी सीड्स जितने होते हैं मैं बचा ही लेती हूँ. कभी जंगल में जाती हूँ, डालती हूँ कि अगर इसकी किस्मत होगी तो उग जाएगा, नहीं होगी तो नेवर माइंड, वर्म्स कैन ईट इट. सो दीज आर दोज सैपलिंग्स. ये मैं दिल्ली से ही साथ लेके आई थी जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया था. तो मैं दिल्ली में भी अपने गमलों में उगा देती थी बीज, फिर जहां मौका लगता था वहां लगा देती थी. सो आई गॉट देम हियर. So wow, so you are working hard. This is we are making, we didn't have much money, so we are making small little water bodies here. बेसिकली ये रेन से पहले किया, सो दैट रेन वाटर कैन. ये बहुत टाइम से ना जमीन किसी ने उगाई नहीं है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 13 years. Okay. तो ऊपर इतना हार्ड सरफेस हो गया कि जब बारिश होती है तो पानी ऐसे ही बह जाता है, इट डजंट गो इनसाइड. जी. तो इसमें बीच बीच में हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि हम बड़े बड़े थोड़े मतलब 2.5 by 2.5 feet के पॉन्ड्स बना दें, so that the water can go in and it can give water to the soil nearby. So this is what we are trying. तो लेबर के अभी इतना हमारे पास खर्चा नहीं था, तो वी आर वर्किंग आवरसेल्व्स. और कोई भी यहाँ फ्रेंड्स आता है रहने के लिए तो मैं बोलती हूँ गड्ढे खोदने हैं तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो. I would love to visit your place. ये गड्ढे खोदने के गड्ढा लिए. फिर आपको भी खोदना पड़ेगा एक. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. I am ready to do that. ठीक है. तो बहुत ही हिम्मत की बात है कि अपने एक पॉश अर्बन एरिया, वो भी एनसीआर से निकल कर ऐसी जगह पे आके, और वो भी इतनी मेहनत के साथ ये सब क्रिएट करना. तो अभी ओके, दिस इज द रैंडम क्लिक. सो Yeah. इसकी ये आपकी मैं देख रही हूँ
कि आपकी इमेज के अंदर भी काफी खूबसूरत और एक नेचुरल हाउस हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये मुझे ना लगता है ये घर इमेज। हमने यहीं से खरीदा था एक्चुअली। तो ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये हाँ जी। उनके बच्चों ने स्टोरी बताई थी दैट दे यूज्ड टू गो टू द रिवर। स्कूल जाने से पहले सुबह 5 बजे उठ के रिवर पे जाते थे बच्चे, वहां से पत्थर लेके आते थे, ओके। 3-4 चक्कर लगाते थे, एंड फादर यूज टू कट देम इन द डे टाइम एंड यूज टू ले देम लाइक दैट। दिस इज चिकनी मिट्टी से एक इसको जोड़ा है। तो अच्छा। वी डिडंट वांट टू टेक दिस वॉल ऑफ। तो जो घर हमने 2 कमरों का लिया था वो हमने एज इट इज ही सेव किए हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम लाइक दैट। हमने इसके अंदर से मिट्टी निकाली है थोड़ी 2-2 इंच तक, और फिर उसको हमने चूना और रेत से उसको अंदर भराई की है, सो दैट थोड़ा मजबूत भी रहे। और नहीं तो ये पानी ना, बारिशें बहुत होती हैं यहाँ पे, तो इट काइंड ऑफ एब्जॉर्ब्स वाटर, तो सीपेज आ जाती है। सो टू अवॉइड दैट हम लोगों ने सिर्फ इसको थोड़ा खुरच खुरच के मिट्टी निकाल के उधर हमने चूना भरा है। ओके। So we wanted to keep this wall alive because it has a story of those small little children. And when we bought this house from them, the man was the owner of the house. He was he was kind of literally into tears. So we asked them that you can stay here with us because it's a community. You don't have to go anywhere because you just need one room. So we can have one room for you. But I think he wanted to move away from here because the life is very hard here, and they were like in their 70s. So but I promised him that we are going to keep this house as it is. We'll just increase, bahar se hum thoda extend karenge. So yeah, that's the story behind this wall. So this is Yeah, this is our first attempt कि यहाँ पे सूरजमुखी होएगा कि नहीं होएगा. So actually, I ordered online seeds, organic seeds. So there were like 45 different vegetables, and there was 5 seeds of this sunflower, जिसमें से एक ही उगा था last year. okay. उस एक को मैंने इतना सहेज के रखा कि इसको चिड़िया ना खा जाए, इसको कोई और ना खा जाए, ये टूट ना जाए. और फाइनली उसमें से जो सीड्स निकले वो इस बार हमने यहाँ पे लगा के ट्राई किया, एंड दे वर लाइक यू वोंट बिलीव, दे वर लाइक some of the flowers were like 12 inches big. 12 inches big flower. Yes, I mean they were like huge, big. So I must say It that was, people should invest in the seeds and the plants instead of investing in gold or some properties or some. I don't have any gold. मेरा जितना था सब बेच दिया था मैंने. And मुझे ऐसा लग रहा है कि I am living my own story because I also did the same thing because मैंने अभी घर बनाना शुरू करा है. Definitely मैंने इतने एरिया में नहीं, लेकिन अर्बन एरिया में ही घर बनाना शुरू किया है. So we are sharing the story actually. Yes, yes, yes. So नहीं you नहीं, know, गोल्ड का तो मेरे को कभी लगता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता why what's the gold. use of gold actually? It's just यूज for के the अलावा भी market. उसके लिए आप यू आर टोटली इनसिक्योर ऑल द टाइम. कोई चोरी कर ले तो फिर अफसोस मनाओ. आई वाज लाइक, क्या यार, मतलब दिस इज रियल गोल्ड. This When is you real look gold at and the it is flower, multiplying. when you look at this big huge flower, you smile automatically. And as you said that you have grown this much plants from just a single seed. That is Single the seed. important thing. It's ये जो seeds हैं और ये जो plants हैं, ये ever growing हैं. आप उनको कितना भी multiply कर सकते हैं. But your one piece of gold is going to stay one piece for the whole time. नहीं, और एक्चुअली फनी थिंग इज पीपल से कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो बिकॉज कभी जरूरत पड़ी आप गोल्ड बेच सकते हो. और जब आप बेचने जाओ तो एवरीबॉडी, ओए गोल्ड बेच रहे हो, Gold based. क्यों बेच रहे हो? अरे भैया, इससे स्यापे से माफी चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए. You are absolutely right. तो उस पे एक टेंशन बनी रहती है कि अरे कहाँ जाना है, उसको संभालना है. एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब हम यहाँ से इस दुनिया से जाएंगे तो वो किसको दे के जाना है, बाद में लड़ाई हो. उसकी भी टेंशन रहती है, मरने से पहले भी टेंशन होती है कि यार मतलब किसके नाम. मेरे घर में आई वोंट बिलीव 2011 और 12 में मेरे घर में चोरी हुई. आई वॉज नॉट देयर इन दिल्ली. माई मदर एंड माई नेफ्यू वर देयर, एंड वो भी 2 दिन के लिए गए थे. उन 2 दिनों के भीतर मेरे घर में चोरी करने कोई घुसा. एंड यू वोंट बिलीव दे कुडंट गेट एनीथिंग एक्सेप्ट कपड़ों की कतरन. आई मीन दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड. उन्होंने सब कुछ उखाड़ के देख लिया, पूरे बेड खाली कर दिए, सब कुछ खाली कर दिया, फैब्रिक ही फैब्रिक.
और जो फ्रिज पे 500-700 रुपए पड़े थे वो भी नहीं लेके गए उनको लगा होगा कि इन्हें ज्यादा जरूरत एंड नोबडी कुड बिलीव कि मेरे घर से एक्चुअली कुछ चोरी नहीं हुआ मम्मा ने पुलिस को बताया कि चोर आए थे, बोले क्या चोरी हो, मम्मी कहते कुछ नहीं, कहते फिर ये कैसी चोरी है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वो अपने पास से ही रख जाते। हाँ मैंने बोला मम्मा को, देखो कहीं रख के गए होंगे कि बहुत फुकरे लोग हैं ये That's a wonderful story actually. Yes. But at the same time, I could see that, I was so free of that कि मेरे को टेंशन नहीं हुआ, oh my God, घर में चोरी हो गई, oh my God. Because if ये था, thank God, मम्मा घर पे नहीं थे, नहीं तो घुस के मार मूर देते, कुछ हो जाता. That was the only fear. But सामान तो कुछ था ही नहीं चोरी करने के लिए, ना टीवी था ना कुछ, फ्रिज बेचारे लेके नहीं जा पाए होंगे खिड़की में से. बाकी तो, और फ्रिज भी कोई इतना अच्छा मॉडर्न तो था नहीं कि वो लेके जाते. So it's a wonderful thing कि हम लोग कितनी पीसफुल लाइफ जो है वो जी सकते हैं, लेकिन हमने अपनी लाइफ को खुद ही टफ बनाया है. We have हम made it लोग complicated actually. हाँ, Yeah. मटेरियलिज्म जो है वो हम पर हावी हो रही है. हम बिल्कुल. जितना मटेरियल इकट्ठा करते जा रहे हैं वो हम पर हावी है. बिल्कुल. We are for the materialistic things and these materialistic things are not for us. Yes. Initially they were built to for helping us. Yeah. And but now we have to recognize that whether these appliances, these modern facilities are helping us or whether they are making us handicapped. वो हमें बीमार बना रही है, handicapped Actually, बना रही है. मेरे को लगता है एक अजीब सा कुछ ट्रेंड चल गया है कि कौन किससे ज्यादा अमीर है होने का. जो एक बेसिक लाइफ की हैप्पीनेस है वो खत्म हो गई है. हमने बच्चों की हैप्पीनेस छीन ली है. पढ़ो 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 पढ़ो, मतलब बच्चा 3 साल का होता नहीं है, मतलब मैंने तो 1.5 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजते देखा है पेरेंट्स को. 1.5-2 साल. आई वाज लाइक, हाँ मैंने मदर्स प्राइड मैंने एक बार ज्वाइन किया था फ्यू मंथ्स बिकॉज आई हैड माय नेफ्यू विद मी कि उसको स्कूल में डालना है कि नहीं डालना है, क्या ये लोग पढ़ाते हैं, जस्ट वांटेड टू सी. सो आई जस्ट ask them कि अगर कोई वैकेंसी, आई वांट टू बी अ टीचर ओवर हियर और जॉइन द स्कूल. एंड आई हैड ग्रेट फन विद द किड्स, बट आई फेल्ट वेरी सॉरी कि यार पेरेंट्स जो है हेल्पर्स के साथ अपने बच्चों को भेज दे रही हैं वहां पे, वो टीवी स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रहे हैं, टीचर्स हाथ पकड़ के उनको कलर करवा रहे हैं. मतलब 1.5 साल 2 साल 3 साल का बच्चा, आप उसको पूरे लाइन के अंदर कलर करो. अरे यार उसका तो अभी मतलब टाइम ही नहीं शुरू हुआ वो लाइन के अंदर काम करने का. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई एंजॉय. हाँ, हम या लोग इतनी छोटी एज से ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसे ही करना है. उनका माइंड सेट हमने ऐसा कर दिया, और जब मैंने अपने नेफ्यू को शेमरॉक में डाला, सो आई टोल्ड द टीचर कि मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ स्कूल में so that he's he make room for other people, for other kids, or he can play, he can share his things with others. So don't teach him जबरदस्ती. So she said, you are the only parent. यहाँ पे लोग आते हैं वो सोचते हैं PhD करके निकले बच्चा यहाँ से. Right. So Amrita ji, this is sowing. You are sowing the seeds. Yes, we are sowing haldi and ginger here. Haldi and ginger. Yes. जी. And ये बहुत मजेदार सब्जी है. This is sweet potato. Sweet potato. Yeah, we have 4 varieties of sweet potato. Okay. This year only we sow it. So let's see कैसा निकलता है यहाँ पे. We are just experimenting, playing with it. Yeah. So this ये आप प्लांट कर रहे हैं sweet potato. Yes. इसकी कटिंग्स लगती हैं. लाइक पहले इसका मेन प्लांट पूरा फैलता है, फिर उसकी हर जगह से कटिंग, उसकी आप जितनी भी कटिंग्स लगाओगे उतनी उसमें नीचे रूट्स बैठती हैं. सो वो जो इतने बड़ा आपने गुच्छा देखा था उसको मैंने कट किया है छोटा छोटा, एंड देन वी ग्रू इट एंड नाउ इट्स लाइक अच्छे से फैल गया है, एंड इट्स गिविंग ब्यूटीफुल कलर्स. Good. Yeah. Wow. Yeah, this is the one. You Yes. can see that we don't need artificial colors. Nature has already given us It's so much. beautiful, और इसमें मतलब chaotic ही है सब कुछ, but it gives such a nice pattern. Yes. And so this is your We are doing the plastering with hands, lime plastering. line plastering with hands. Yes. Okay. So you are giving me the idea that how I can go
I can create my own space. Yes, 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 बिल्कुल. और अगर आपको help चाहिए, I can come and teach how to do this. Anytime, because Yes, yes, most probably we are starting the construction. We will discuss about that. sure, sure. Nice. And अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि आपने उसमें Pointing, yeah, we are doing that pointing. We have now putting this lime and wreath inside. so this is your Puppies. extended family. Yes. Yeah, I saw your video on Facebook where you were cooking something for your kitten. Yes. I was cooking eggs and he was like so restless. Meow, 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 meow. So I had to hold him and then cook it. You can see the happiness on your face and the excitement that kitten was showing. I know. They're lovely. Yeah. Yeah. So here we are spreading the manure actually. Bakri ka khaad dal rahe the udhar. And this is, yeah, this is the field we are making it ready for til, sesame seeds. See. Yeah. Yeah, this is our meditation place. We go in the evening and when friends are here and we do this meditation because there's a river just next to the land and you can hear the sound. Right. Yeah. Small little girl who was not able to climb up the hill, so she's on my back. So here we are doing something with the kids. We are making this main gate with the bamboos and we are tying it and yeah. Right. This is youngsters thing, yeah. So this is, we are harvesting sesame. Okay. Yeah. And here I'm teaching some kind of embroidery to this little girl who wanted to work with needle and thread. Okay. And this is the river. We're enjoying in the river. After doing our plantation, it was so hot in the sun. So we went to the river. Wow. Yeah. Right. I can And this is our mango lassi. mango lassi. Yes. My daughter is fond of mango lassi. Yeah, you should send her here. Yeah. We will come together. Yes. And the rug which you're seeing, you know, the cover, Sorry. the cover on the table. Yes, it is with, I think, dupattas, right? Yes. Strips of dupattas. Yes. My mother's 5-6 dupattas I've. And after that with crochet. Yes. Sure. I used to do this. I'm using the foot mats at my own house using the wool. Okay. That's So great. we Yeah. never bought the foot mats from the market. Yeah, even I've never. This is, I think, Exora. Yeah, these are the flowers which are kind of giving more Exora happiness. most probably. Yeah. These are also seasonal plants. Yes. And, ये गुल दोपहरी बोलते हैं इसको. yes, gultapari bolte hain isko. It's very good when ये bees आपको sting कर दें. So you just take out the flower and Okay. crush it and put it on that area. It relieves immediately. Okay, so धूप खिली का ये benefit है. हाँ, the flower. Okay, so otherwise तो we used to use मीठा soda. अच्छा. वो apply कर देते हैं. हाँ. Okay. नहीं हम लोग तो जैसे यहाँ पे बहुत है ना, यहाँ पे bees बहुत है. हाँ जी. तो होता रहता है. So we just take out a flower and just rub it on that. Okay. Yeah. So that means you are living your life completely with the nature. Oh yes. We can say that minimalistic life. Yes. Now, without putting any burden on the nature. I don't know. Maybe we are the burden. Actually, we humans are burden to the nature. Yeah. I'm trying कि इतना burden ना करूं. जितना possible है, जितना अपने हाथ में है उतना. At least. जी जी. Yeah. So मैं आपसे जानना चाहूंगी. You use the word. You're using the dry toilets here. Yeah. तो नहीं, आपको we are not using. I'm saying I want to build few dry toilets here. अभी जो है हमारे pit वाले हैं. They are there's a like a it's like pit जिसमें हम नीचे सूखी पत्ती और थोड़ा चूना और थोड़ा ash नीचे डाल देते हैं.
and then when it the pipe goes in it, तो जितना भी उसमें गिरता है वो सारा is eaten by the good bacteria there. तो वो पानी कहीं और नहीं ऐसे जाता है. बिकॉज ड्राई टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट भी जो है विलेजेस में स्पेशली लद्दाख साइड पर ड्राई टॉयलेट्स में वो बहुत ही यूजफुल है. वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज में वो ड्राई टॉयलेट्स यूज करते हैं. एंड अगर उनको रिसेंटली आई वाज इन टच विद समबडी जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया. एंड उनका यही कहना था कि अगर उनको बोला भी जाए कि नहीं वो लोग मॉडर्न टॉयलेट्स वगैरह बनाए वहाँ पे, so they completely refuse. Yeah. And they are so conscious that they know we are not going to waste the water. Yeah, that's so true. मतलब मुझे भी every time I flush, I feel very bad about it. Yeah. So I have bought this book, Humanure, and although little technical, but I think I'll find somebody who can help me to, build these dry toilets. They can help you in that. We have Yes. experts who are using as well as they know, and they have shared the details that how to Okay. build the dry toilets. Okay. Please get me in touch with them. I would definitely would like to. Yeah, invite I them will in and connect her ask. to them. Yeah. So, अमिता जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यार मैसेज तो मैं सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैसेज दूंगी, बट आई वुड से कि कभी इस प्लैनेट को, मतलब लाइक माय टीचर यूज्ड टू से कि आप अगर किसी जगह को इस्तेमाल करते हैं तो उसको या तो पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल छोड़ के जाएं, अगर उतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जैसा आपको वो मिली थी जगह यूज करने के लिए उतना छोड़ के जाएं. तो मुझे ये लगता है कि I think it's the change in the thinking, that you have to change your thinking, that I'm not the owner of the planet in a way, I'm just a visitor here. So I should act like a visitor and not like a boss here. Yes. So I should be thankful that, I've been given so much of everything in abundance. Actually, everything here is in abundance, including food, air, water, everything. It's just that we started accumulating and we are taking somebody else's share. तभी इतना difference है ना. Somebody is so rich and there are people, like I used to meet my street kids, and एक बार मैं 1 महीने के लिए गई थी. जब मैं वापस आई, so what they said, ओ अब हमारी दीदी आ गई ना, अब हमें रात को खाना मिलेगा सोने से पहले. And I was like literally into tears कि तुमको खाना नहीं मिलता था. तो मुझे ये लगता है कि यार मतलब हमारे पास इतना होने का क्या पॉइंट है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है. और ऐसा नहीं कि लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट. कहीं पर वेस्ट हो रहा है और कहीं पर भूखे मर रहे हैं. बिल्कुल. So this imbalance. Yes, there is an imbalance. Right. So we should consider that कि जब भी हमारी थाली में खाना आता है हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस भगवान का कि जो हमें ये खाना दे रहा है, जो हमें ये सांसें दे रहे हैं. Also, वो मतलब मैं देखती हूँ लोगों को वो प्लेट भी इतना भर लेते हैं जो वो कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं, खा भी नहीं पाते हैं, एंड दे लीव इट. It all goes into the dustbin. Yes. और when I start, मैं यहाँ पे जो भी ग्रो करती हूँ ना, मेरा तो कुछ भी वेस्ट ऐसे नहीं जाता है. छिलके होते हैं, इधर काउज विल ईट. आजकल तो हमारे जो डॉग्स हैं वो सारे वेजिटेरियन हो गए हैं, तो कद्दू के छिलके, कद्दू के बीज, एवरीथिंग दे ईट. Oh wow. This is the news. तो हम लोग ना मतलब एक एक चीज कि कुछ भी वेस्ट ना हो. अगर हम नहीं खा सकते तो कोई और खा ले. गाय है जैसे गांव में, गायों को डाल देते हैं. सो इतनी मेहनत से उगाते हैं लोग. दे डोंट रियलाइज कि कितना फार्मर्स को आई थिंक सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है, बिकॉज वो रॉ मटेरियल निकाल के देते हैं और सारा रेडीमेड खरीदते हैं. तो उनके लिए सब कुछ इतना एक्सपेंसिव हो जाता है. बिल्कुल. एंड वी डोंट वैल्यू दैट देयर एफर्ट्स. कि कभी सुअर आके खत्म कर गया, कभी बर्ड चिड़ियाओं ने खा लिया, कभी बंदरों ने तहस नहस मचा दिया. तो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट.
So what's your thought, अमृता जी, कि अगर ऐसा किया जाए कि ये जो ग्रो करने की जो ट्रेनिंग है, प्लांट्स को ग्रो करने की ट्रेनिंग है, ये स्कूल्स में कंपल्सरी कर देनी चाहिए, मेरे ख्याल ताकि से तो ये तो हमारे बहुत बच्चे जरूरी है, बहुत जरूरी। रियलाइज करें कि कैसे खाना, कैसे ये जो अनाज है, ये जो फ्रूट्स हैं, कैसे उगते हैं और इनको कितनी पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है, और बिल्कुल तब जाके ये हमारी थाली में आता है, बिल्कुल। सो दैट दे कैन वैल्यू द फूड। यस, ऑल्सो दे शुड नो व्हाट दे आर ईटिंग, बिकॉज आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता कि पोटैटो जो है वो जमीन के नीचे लगता है कि ऊपर लगता है। ऊपर लगता है, राइट। सो अगर जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर जो बायो में लैब्स हैं, लैब्स शुड आल्सो बी लाइक दिस, कि जहाँ पर उनको एक्चुअली में ग्रो करना सिखाया जाए। वहाँ पर बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में फार्मिंग का कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि ये बच्चे सीख पाए, वो नेचर के साथ जुड़ पाए और खाने की वैल्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल, So बेसिक वैल्यूज चाहिए। जी, राइट। Thank you so much, Amrita ji. It's a थैंक यू। great that we are together at this show. Yeah. Now I would like to share that last year we have started the project planting the Triveni. Triveni is neem, people and burger. When these three plants are planted in a single pit and then they grow together, just called the Triveni. So जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जगह स्पेस कम हो गई है या ऐसे हैं, तो स्पेस, ये प्लांट्स हमने लगाने बंद किए क्योंकि रहता है कि ये बहुत ग्रो करते हैं, इनकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो दे कैन डैमेज इवन द बिल्डिंग्स। हाँ, क्योंकि हमारे लिए ना बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट हो गई हैं। बेसिकली हम भूल जाते हैं कि ट्रीज तो ऑलरेडी वहां पे थे, ये तो हम लोग आए हैं। हम लोग आए हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल। सो इसी कोशिश के साथ हमने लास्ट ईयर जो है त्रिवेणी प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है और जो कोई भी त्रिवेणी वगैरह कहीं पर भी प्लांट करें, दे कनेक्ट विद अस so that we can recognize number of the trees that has been planted or that in the near it will be planted. कोई भी interested है वो हमारे साथ कनेक्ट करें। एंड हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, if you have the space then please plant at least one tree। अगर आप 10 प्लांट उगा रहे हैं देखो, मैंने ना इकट्ठा नहीं लगाया है, बट आई हैव प्लांटेड लाइक 10 नीम्स हियर अभी, और आई थिंक 5 or 6 पीपल ट्री, और हमारे खेत के साथ ही बहुत बड़ा सा एक बैनियन ट्री है ऑलरेडी। जी, सो बट इकट्ठा नहीं लगाया। इफ यू वांट मी टू डू इट ऑल टुगेदर आई कैन डू दैट। आप इकट्ठा लगा के देखिए, एंड जब जो तीनों इकट्ठे ग्रो करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन द फुल ग्रोन टिवेरी दैट वाज अराउंड 30 to 40 years old, so it's a very beautiful concept। आई नो, आई हैव सीन दोस, yeah आई हैव सीन सम। या नीम का थोड़ा सा यहाँ पे ना इस एनवायरनमेंट में थोड़ा स्पेशल केयर करना पड़ता है, स्पेशली इन विंटर्स। वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा वो नीम बड़ा हो जाए, आई थिंक देन वी कैन प्लांट दीज टू विद नीम, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स ट्राई। हाँ, एक ट्राई करके देखते हैं। जी बिल्कुल। सो आप ट्राई कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए कि वो ग्रो हुआ कैसे हुआ, सो दैट के बाकी हम और भी जो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। सो ये जो हम लोग ने ग्रीनर हैप्पी टुमारो का प्लेटफॉर्म है, वो इसी मकसद के साथ बना रहे हैं कि ताकि अपने अपने एक्सपीरियंसेस, वी आर ऑल लर्नर्स, वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, और यही एक्सपीरियंसेस जब हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे तो I hope it will be a system to support everybody. Yeah. So it can support each other as well as our ecosystem, our whole environment. So anybody who would like to contact us, please contact us through our website, through mail IDs. We all are, our social media links are available here. So stay in touch. See you all on for the next show every first and third Saturday. Log in at 6 o'clock with us. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.